And let me show. ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, तो अगर वो कन्वर्ज करती है, तो अगर मैं उसको रीअरेंज करूं, यानी अगर ऐसे है 1 + 1/3 + 1/4 कुछ है सीरीज मेरी, सो ऑन, अगर मैं उसको रीअरेंज करता हूं 1 + 1/3, वो सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव, प्लस 1/1 यहाँ पे लाया मैंने, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर ये कन्वर्ज करती है एल को, तो ये भी है नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए। So now we show that this is also true for series that are absolutely convergent, not necessarily non-negative, but absolutely convergent. जैसे हमें पता है ये सीरीज absolutely convergent है, कौन सी? 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 plus 1/16 -1/32. This series is not a series of non-negative terms. इसमें positive terms and non-negative terms, but this series is absolutely convergent. और मजे की बात है, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लिमिट आएगा 2, 2 नहीं आएगा, सॉरी, मतलब एब्सोल्यूट, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लूं तो उसका लिमिट 2 आएगा। Anyways, what I'm trying to say, absolute convergence series अगर वो नॉन नेगेटिव भी हो, कुछ टर्म्स नेगेटिव भी हो, तब भी उनके लिए ट्रू है कि रीअरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़े। So let's do that here. वो इसी का एक सीधा साधा क्या बोलते हैं ना, एक कॉन्सिक्वेंस है जो हमने अभी किया फॉर नॉन नेगेटिव टर्म्स। So let us me write down the theorem. Theorem ये है, if summation n runs from 1 to infinity an converges absolutely to A, then any rearrangement summation n runs from 1 to infinity Bn of the given series also converges to the same limit. Also converges, not only converges, it converges absolutely to A, to the same number. यानी अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो फिर अगर मॉड लगा दूं तो हमारा वो सेम ही आएगा। प्रूफ इसका ऑटोमेटिकली है, जो हमने नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए किया उसी से फॉलो हो जाएगा। नाउ लेट, जैसे हमने किया था, लेट P and B इक्वल टू, जैसे हमने इससे पहले किया था, मैक्सिमम ऑफ A and 0 and Q and B इक्वल टू minimum of A and 0. By that I mean Pn was defined to be An if n is positive, 0 otherwise, नहीं, मैंने ऐसे करना था, and Qn was equal to An if n is negative, that's equal to 0, right, if An is positive. तो ये हमने पहले ही डिफाइन किया। So let P and B equal to this, so that An can be written as P sub n plus Q sub n. Then, since summation n runs from 1 to infinity converges absolutely, तो हमें एक चीज पता है कि दोनों सीरीज जो हमने दी Pn की n की जो सीरीज बनेगी, they must both converge. So therefore summation n runs from 1 to infinity P sub n and summation n runs from 1 to infinity Q sub n both
converge. Say, let's call that their limit is something. So now एक और बात जो है, चूंकि ये नेगेटिव टर्म्स है ना, इसका जो लिमिट है वो भी नेगेटिव ही होगा, बिकॉज लिमिट प्रिजर्व्स द ऑर्डर, सो इट इंप्लाइज दैट, कहाँ गई हमारा स्क्रीन, कहाँ गया, इधर। तो इससे एक और बात पता चलेगी, ये जो क्यू है वो नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। सो ऑल्सो देन अगेन, चूंकि ये कन्वर्ज करती है और उसका लिमिट ए है, so I should have p plus q equal to a, because using the laws of the limits, right? इसका लिमिट a है, इसका p है, इसका q है, just take the limit on both sides. Okay, so I've got now for some rearrangement. तो अगर मैं लूँ कोई sequence of natural numbers and I run from 1 to infinity, we have pi को अगर मैं लेता हूँ an sub I, it can then be written as pn sub I plus qn I. Moreover, अगर ये इसका रीअरेंजमेंट है तो ये pn का रीअरेंजमेंट होगा. That's how it works. ये ans ही होते हैं. Moreover, summation n runs from 1 to infinity p sub n I is a rearrangement of the series summation n runs from 1 to infinity pn of non-negative terms, क्योंकि ये non-negative terms of non-negative terms, क्योंकि ये जो pn's हैं वो non-negative, they are the maximum of an and 0, so they will be always bigger than equal to 0. Non-negative terms, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि इसका rearrangement भी p होगा. Hence by above theorem जो हमने किया, hence summation n runs I runs from, यहाँ I रखना चाहिए, okay, that's our index. Summation I runs from 1 to infinity p n sub I should also converge to p, क्योंकि अभी हमने देखा नॉन नेगेटिव टर्म्स का जो सम होता है वो भी होगा. Similarly, I can prove that. Similarly, summation I runs from 1 to infinity q n sub I is equal to q. अब तुम करोगे ये क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव है सारे टर्म्स, बाय द वे ये भी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, हमने माइनस क्यू एन आई वाली सीरीज, अब वो कन्वर्ज करेगी, तो इसका मतलब अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगी टू ए नेगेटिव, सो नो इशू. So hence I can say, अगर ये दोनों कन्वर्ज करेगी तो bi भी कन्वर्ज करेगा. It implies that summation I runs from 1 to infinity bi converges, and summation I runs from 1 to infinity bi is the same as summation I runs from 1 to infinity pn sub I plus summation qn sub I runs from 1 to infinity, that's again p plus q, that's equal to a. तो अभी हमने दिखा दिया कि हमने उसका रीअरेंजमेंट लिया ओरिजिनल सीरीज का, दैट इज कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंस तो हमने दिखा दी, हमें दिखाना है इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आल्सो. So all that remains to be shown, is that summation bi जो rearrangement है अपनी ओरिजिनल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का is absolutely convergent. तो ये हमारा काम होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, now since bi is equal to pn sub I plus
Qn sub I, we have modulus of Pi would be less equal to modulus of Pn sub I plus Qn sub I. So that is just less than equal to, using the triangle inequality, Pn sub I plus Qn sub I in modulus. अब चूंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दिस इज जस्ट Pn sub I minus Qn sub I, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका मॉडुलस होता है माइनस ऑफ दैट नंबर. So thus for any capital N belonging to the set of natural numbers, अगर मैं इसका कोई partial sum देता हूँ, यानी B1 modulus plus so on and so forth plus Bn is less than equal to, by this reasoning, क्योंकि Pi less than equal to है, it would be summation, it should be actually Pn 1 plus so on and so forth Pnn minus Qn1 plus so on and so forth Qnn, right? Which of course would be less than or equal to summation I runs from 1 to infinity, क्योंकि finite है, non-negative है, so अगर मैं इसकी टर्म्स बढ़ाता हूं तो ये बड़ा ही होगा Pni, और यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि बीच में ये माइनस साइन है तो ये भी इससे लेस देन ही होगा. एक्चुअली बड़ा होना चाहिए क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो वो उसे वापस लेस देन बना देगा. I hope you get that. Okay, but that's equal to P minus Q. This converges to P, this converges to Q. So what does that mean? That means the partial sums of summation I runs from 1 to infinity modulus of Pi are bounded above. और अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है, क्योंकि ये मॉडल है लगा हुआ है यहाँ पे, तो नॉन नेगेटिव है, so therefore it means that summation Pi modulus I runs from 1 to infinity converges, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, it is less than infinity, which implies that summation Pi I runs from 1 to infinity converges absolutely. So we are done. So अब हमने दिखाया ये जो है ना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और क्या बोलते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस, मुझे लगता है हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि सीरीज हो सकती है कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगी, लेकिन अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इट नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है इट नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. हाँ, कन्वर्जेंट तो है. एग्जाम्पल जो हमने लिया था ये, राइट, this is convergent लेकिन conditionally convergent. Now this is also convergent, this is also convergent, but this is absolutely convergent. अगर मैं mod भी लूंगा इसको तब भी ये convergent ही रहेगी, लेकिन अगर सारी terms नॉन नेगेटिव है तो convergent, अगर सारी नॉन is the same as absolutely convergent. लेकिन अगर कुछ टर्म्स पॉजिटिव है, कुछ टर्म्स नेगेटिव है, तब सिचुएशन होती है क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या क्या ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का फायदा ये है, तो उसमें अगर हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ रीअरेंज करके हम लिमिट को बिल्कुल उलट पुलट कर सकते हैं. जो भी इसका लिमिट होगा अगर ये कन्वर्जेंट है और कंडीशनली कन्वर्जेंट है, we can make it converge to any other number. That's true for all conditionally convergent series. तो हम वो थोड़ा complicated था, थोड़ा सा मतलब पहले रियल एनालिसिस कोर्स में नहीं होना चाहिए, बट हमने एक एग्जांपल ये जो ली थी इसमें हमने दिखा दिया that you can make it converge to any number, any pre-assigned number.
So having done that, we come to tests for convergence. उसमें जो सबसे पहला वाला है मैं तो करना चाहूंगा वो है what we call P test. सर आप इतना ही पढ़ेंगे? इतना ही पढ़ेंगे? चलो आज ये बंद कर देते हैं. Okay, let me end it here. इंशाल्लाह कल फिर से पढ़ेंगे.